discuss about the projectile, the best example of motion in 2 dimension. मोशन इन 1 डायमेंशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. प्रोजेक्टाइल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशंस. तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल है क्या? प्रोजेक्टाइल इज द नेम ऑफ बॉडी, moves in a space under the effect of gravity, without propelled by any engine, without burning of fuel, makes some or having some horizontal velocity. That is known as projectile. Projectile is a name of body, moves in a space under the effect of gravity, without propelled by any engine, without burning of fuel, having some horizontal velocity in horizontal direction. That is known as projectile. ये लास्ट लाइन यूज की गई है, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. उसका मतलब अगर आपने एक बॉल स्ट्रेट फेंक दी, वही कैच कर ली, तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा क्योंकि पैराबोलिक पाथ नहीं हो रहा. क्लियर? दूसरा, अगर हम बात करें सैटेलाइट वगैरह की, तो उसमें रॉकेट लगा होता है, इंजन जल रहा है, भले ही उसका पाथ प्रोजेक्टाइल है, वो भी एग्जांपल नहीं है. तो प्रोजेक्टाइल इज ए नेम ऑफ बॉडी, मूव्स इन अ स्पेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. न तो उसमें फ्यूल जलना चाहिए, ना ही इंजन होना चाहिए, एंड वेलोसिटी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दैट इज प्रोजेक्टाइल. अगर आप कोई चीज़ यूं फेंक देते हो, इट इज ऑल्सो वन एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अगर यूं फेंकते हैं, इट इज ऑल्सो वन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल. स्टेट यूं फेंक रहे हैं, इट इज ऑल्सो वन प्रोजेक्टाइल. कोई स्टोन दिया, आपने यूं फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल है. कोई बॉल आपने यूं फेंक दी, प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि उसमें कोई इंजन नहीं लगा है, कोई फ्यूल नहीं जल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ रहा है. तो प्रोजेक्टाइल इज नथिंग, इज अ बॉडी, मूव्स इन अ स्पेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, विदाउट प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन, विदाउट बर्निंग ऑफ फ्यूल, हैविंग सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दैट इज प्रोजेक्टाइल. क्लियर? और अब लेके चले हम लोग, इसमें 2 केस बनेंगे. प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और दूसरा केस बनता है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन. तो पहला केस हम लोग लेके चल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. फॉर दिस प्रोजेक्टाइल इनिशियल हाइट इज कंपल्सरी. देयर शुड बी सम इनिशियल हाइट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस. जिस छत से आपने कोई चीज फेंकी, तो वो प्रोजेक्टाइल बन गई. सम इनिशियल हाइट इज रिक्वायर्ड, इज नेसेसरी. सो here the initial height is h, y equals to h, it is x, that is r, beam कहलाएगी, and body projected horizontally with initial velocity u under the effect of gravity path change, that is v at an instant, vx and is v is the instantaneous velocity. That is v is the instantaneous velocity. Vx and vy, these are the components in x as well as in y direction. Okay? और अगर ये मोशन 2 डायमेंशन का है, तो आपको पता है 1 डायमेंशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़े. क्या कहते हैं? v equals to u plus at था. ये 1 डायमेंशन के लिए था. नाउ फॉर 2 डायमेंशन, vx equals ux plus axt, vy equals to
uy plus ayt। ये 2 डायमेंशन के इक्वेशंस हो गए। सिमिलरली s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर फॉर x डायरेक्शन। सिमिलरली uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर is second equation motion in 2 dimensions। Third equation v square equals to u square plus 2as, यहाँ आ जाएगा vx square ux square 2ax x vy square uy square 2ay y। क्लियर? तो अब ये इक्वेशंस यूज करेंगे क्योंकि मोशन इन 2 डायमेंशन का केस है, तो हमें अब ये इक्वेशंस यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मोशन इन x डायरेक्शन एंड देन मोशन इन y डायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मोशन इन x डायरेक्शन। मोशन इन x डायरेक्शन, फर्स्ट इक्वेशन लेके चलो, vx इक्वल्स टू ux प्लस axt। From the definition we know that projectile is the name of body moves in a space under the effect of gravity। और ग्रेविटी का इफेक्ट y डायरेक्शन में होता है, वर्टिकली होता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं। और ना ही कोई इंजन लगा हुआ है, ना ही कोई फ्यूल जल रहा है। दैट्स वाई एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। आप अगर कोई बॉल फेंक रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई बॉल यूं फेंकी 10 मीटर पर सेकेंड से और आपके हाथ से छूटने के बाद 20, 30, 40 होती चली जा रही है। क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। That's why in case of projectile, horizontal velocity always remains constant, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। सो ax 0 ux प्लस 0 और ux क्या है, u। ये मोशन इन x डायरेक्शन आ गया, वेलोसिटी आई है। अब पोजीशन निकालना है x डायरेक्शन, x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन इन 2 डायमेंशंस। नाउ x इक्वल्स टू ut, अगेन एक्सेलरेशन 0, t equals to x upon u। Okay, so in the motion in x direction, now discuss about the motion in y direction। motion in y direction, तो vy equals uy plus ay। In case of y direction, initial velocity will be 0 because आपने बॉल कैसे फेंकी थी, यू फेंकी, ऐसे नहीं फेंकी या ऐसे नहीं फेंकी, यू फेंकी। तो इनिशियली बॉडी प्रोजेक्टेड ओनली इन
x direction. That's why initial velocity of projectile in y direction will be 0 in that case. In that case. So it's 0. But there will be a effect of gravity. So Vy equals to gt. The velocity in y direction. Now position in y direction. Y equals to uyt plus half ayt square. Y equals to it's 0 half g t square, or y equals to half g. Putting the value of t from equation 2, x upon u square half g x square upon u square, or y equals to half kx square. What is k? G constant, u constant. U is the horizontal velocity, and you know that in projectile horizontal velocity remains constant. That's why half kx square. And you know that in the equation of parabola. That's why path is parabolic. So in the equation of parabolic path, parabola, yeah, equation of the projectile, or equation of trajectory, y equals to half kx square. So this proves that the path followed by projectile will be parabolic in nature, half kx square. Now we want to calculate the टाइम. यहां से यहां तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा. ठीक, तो टाइम लेके चलो, टाइम निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब निकालने चाहिए. टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट you want to calculate the t or t. Now from this equation y equals to half gt square and y equals to h. So h equals to half gt square, so t equals to root 2h by g is the time of flight of horizontal projectile, or projectile given horizontal projection. We can calculate the range. Range means horizontal distance covered by projectile during its projection. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की distance. Horizontal distance covered by projectile during its projection. So we want to calculate the horizontal range. R, yeah, x, Vx into t, distance equal to speed into time. So Vx into t. What is Vx? That is u. What is t? Root 2h by t. So what is the formula of the range? R equals to u root 2h by t. R equals to u root 2h by g is the formula of horizontal range. Okay? और हाइट का तो फॉर्मूला फिर ये है, हाइट का फॉर्मूला ये है, फॉर हाइट
h equals to half gt square. Now we want to calculate instantaneous velocity. हमें v calculate करना है, instantaneous velocity. So instantaneous velocity v equals to under root vx square plus vy square, or v equals vx, that is u, vy gt. So the magnitude of the instantaneous velocity. चूंकि ये velocity है, that's why we have to calculate the direction also. So if suppose this angle is beta, if this angle is beta, then tan beta equals to vy over vx. Putting the value of vy and vx, vy gt, vx, that is u. So from this equation we can calculate the beta. So beta बनेगा tan inverse gt by u. So we can calculate the velocity from this formula, magnitude, and from this we can calculate the direction. Clear? In the case of projectile given horizontal projection, तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया? Path, equation of trajectory, that is half kx square. In the equation of parabola, so path is parabolic in nature. After that we calculate the time of flight, the total time taken by projectile during its projection. So that is t equals to under root 2h by g. इसको आप कैपिटल t भी लिख सकते हैं. And the second we calculate horizontal range. Horizontal range means distance covered by projectile during its projection in x direction or in horizontal direction. So that is vx into t. So r equals to u under root 2h by g is the formula of the range. Now height का formula तो यही था, तो इसलिए h equals to half gt square, and then we calculate instantaneous velocity. So instantaneous velocity, that means v. So here we use Pythagoras theorem, vx square plus vy square, that is equal to u square plus gt square. Value put कर दी vx और vy की. So by this formula we can calculate the magnitude. Velocity is a vector quantity. Direction also required. For direction we use tan beta, vy over vx. Again putting the value of vy and vx. So beta equals to tan inverse gt by u. Okay. Now numerical लेके चलने हैं इसको और क्लियर करने के लिए numerical. तो स्टेटमेंट सुने numerical. A plane flying horizontally at 100 meters per second at a height of 1000 meters releases a bomb from it. Find the time to reach the ground and the velocity with which the bomb hit the target in the ground, and third, the distance of the target. Again, I repeat, a plane flying horizontally at 100 meters per second at a height of 1000 meters
100 meter per second, and h is given, it is 1000 meter. Now find the time to reach the ground. टाइम निकलना है, ये फॉर्मूला लिखा टाइम, T equals to root 2h by t, h 1000 की 9.8. इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 14.28 सेकेंड्स. तो टाइम आ गया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया और हमें निकालना है वेलोसिटी विद विच द बॉम्ब हिट द टारगेट. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला था. तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन, दैट इज यू इज गिवन. हमें यानी ये Vx भी हो जाएगा, Ux plus 0, so this goes to 100 meter per second. Vy आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ करती प्लस gt 9.8 इंटू टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं 14.28. ठीक, ये वी बाई आर और अब वी कोस्ट अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी कोस्ट वी एक्स की वैल्यू 100 that is 9.8 into 14.28 का स्क्वायर. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 172.1 मीटर पर सेकेंड. लेकिन डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है, अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है. So for direction beta equals to 10 inverse gt upon u vy over vx, so gt by u, or it is equals to 10 inverse 9.8 into t 14.28 डिवाइड बाई u, और u हमें पता है 100. जब इसको लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो बीटा मिलेगा 54 डिग्री 28 मिनट्स. ये बीटा डायरेक्शन आ गया. और अब थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना, रेंज. थर्ड पार्ट है द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, ये कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ टारगेट. सो x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू vx इंटू t. vx मीन्स u, दैट इज 100, और t हम लोग निकाल चुके हैं 14.28. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1428.5 मीटर. तो इस तरह ये सॉल्व होगा क्वेश्चन. क्लियर? तो एक न्यूमेरिकल हम लोग लेके चले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, किस तरह
एरोप्लेन बम गिराया और देखो पाथ पैराबोलिक बना, गिराया यहाँ से था लेकिन वो यूं गया, तो बॉम्ब की इनिशियल स्पीड वही काउंट होगी जो प्लेन की थी, जो एरोप्लेन की थी। इनिशियल वेलोसिटी वही होगी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, इसलिए टारगेट की डिस्टेंस कितनी आई, रिलीज यहां से किया और गिरा यहां पर 1428.5 मीटर। So in the case of horizontal projectile, clear? नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके चलेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन, ओके?